जो है वो ज़्यादा देर स्कूल में गुजारेगा, पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी होगी। लेकिन जब वो नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, मुख्तलिफ सर्वेज हैं, इलेक्शन हैं, पोलियो के खतरे हैं, सेंसस है, इस तरह की नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ में जब इन्वॉल्व होगा टीचर तो फिर स्टूडेंट्स इनरोलमेंट भी मुतासर होती है। तो हमें कोई ऐसे इक़दाम मिल के गवर्नमेंट लेवल पे और आप बैठ के ऑफिसर जो हैं इसका सोल्यूशन जो है यहाँ जो रोड मैप में दिया गया वो नहीं है, बल्कि एक जुमला लिखा गया 30% टाइम जो है इन नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ में हमारे टीचर्स का ज़ाया हो रहा है। तो जिसकी वजह से अच्छा फिर ये कि लर्निंग प्रोसेस में ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हम 2-4 सबक एक ही दफ़ा पढ़ा दें, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब ये दरमियान में अपसेट आता है, मुख्तलिफ नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज में टीचर जाता है तो तसलसल फिर टूट जाता है और बच्चे जो है उनकी लर्निंग भी बेहतर नहीं होती और उसमें फिर अटेंडेंस जो है उनकी वो भी बेहतर नहीं हो सकती। तो हमें हाँ बल्कि वो मैडम साहब कहने के पीछे हटती है, उनका जो कुछ होती है वो पीछे चले जाती है। फिर आप देखिए कि 2.5-3 महीने की छुट्टियां हैं, नेशनल डे में उनको सारा शामिल करके अगर हम देखें और नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ हमारे टीचर को उसको हम काउंट करें तो फिर आप देख लें कि रिजल्ट के क्या होंगे हम जो हमारे सामने। शुक्रिया। Saad, can you summarize that in one sentence in English for me? Yeah, so basically the big problem Hold the microphone near your mouth. Teachers are engaged in non-academic activities and the department needs to help EDOs to reduce that. Thank you. The man in the green shirt here. Farhan, District Education Officer, Muzaffargarh. हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं इस पे वेरीफाई हमने टिक किया है क्योंकि इस साल जो हमने यूपीई का टारगेट था, मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा था 2,14,000 बच्चे, और जो हमने अचीव किया है 94% हमने अचीव किया है और इंशाअल्लाह हम इस पे वेरी कॉन्फिडेंट है कि हम इसको अचीव करेंगे। Shukriya. Saad, can you translate him? Yeah, so they had a target of 90, they had a huge target of universal primary enrollment and they have achieved it to some extent, but they're still working on it. Right, so it's a tough challenge, absolutely. Keeping in view the commitment of our Punjab leader, Niaz Sharif, we are very confident that we will achieve the target. Thank you. Alright, so thank you to the people at that end, that is really helpful. Saad, I don't think there's anything you want to say personally in Urdu at this point about the points. तो ये आपके मैं एक पॉइंट को एड्रेस करना चाहता हूँ जो आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हमारे ट्रांसफर में, रिक्रूटमेंट में और जब हम एक्शन करते हैं रिपोर्ट पे जी तो बिल्कुल। तो उसके ऊपर मैं 2 पॉइंट्स बोलूँगा। पहली चीज़ ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बात है कि आप ये इश्यूज रेज कर रहे हैं और डिपार्टमेंट और सब आपकी मदद करेंगे इस चीज़ में। What we hope is that by the end of tomorrow you will be more confident. I want to go to that end. We'll bring you back to that Simon. Thank you, Michael. Just to say that Michael and Simon and I have done these voting exercises around the world in a number of places. I don't think I've ever seen a voting exercise with 80 people done so efficiently, quickly and calmly. We did them in America and they take ages. So I think well done on the process. 2 interesting groups of people here. A group of people who are in part confident. I don't know if anybody would want to comment from these tables on why they felt in part confident. I know one of the colleagues here from this table was talking to me about that. Would you like to? It's got a microphone. I'm Ashwini, District Education Officer. As we have pasted the sticker on 2 ends in this hall, there is a difference in the range in the response as well as the prevention expression. From the end of this,
majority respondent is towards the very, but there is not even single response towards not very, towards not very, not very in part. It's the first point towards the achievement of our targets. If you see that one individual is thinking, it is only one response, and the second individual is thinking, it is the second response. When two individuals combine thinking, there is a third response. It is the neural mechanism. We are sitting here, and many minds have shared our experiences and responses. But there are targets that we have to achieve. But when we use all the energies, and when we have to achieve 100% targets, then we have to think 105%, then we can achieve our 100%. But we are going towards achievement of objectives. Although there are hurdles, there are problems, although there are many obstacles, but we have to face obstacles. We are teachers, we are managers, we are not managers, we are administrators, we are EDOs, we are DSD. We have to think and we have to achieve targets. I think there is a very probability in my mind that we can not only achieve but also we can beyond the achievement of our targets. Thank you very much. Thank you. Anyone else please was able to फोकस किया हुआ है और इस तरह से टेक्निकल लोग जो डिसिप्लिन के लिए वो अपॉइंट किया जा रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस सारे एडवेंचर में नतीजे के तौर पर पंजाब जो है ऐसे मोटिवेट करेगा और ये हमारी जरूरत भी है और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट और की रिक्वायरमेंट भी है। Thank you very much. रोडमैप के हवाले से तो एक बात है, रैंकिंग में इन पार्ट और वैली को टारगेट किया गया है, निशान लगाए गए हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम शायद बहुत आसानी से वैली में नहीं पहुंच पाएंगे। उसमें फील्ड के जो मसाइल हैं उस कारण से पहले भाई ने बताया, और दूसरा फॉलो अप की बड़ी बात है। बहुत अच्छी पॉलिसीज आती है, दस्तूर नकल आया, तालीमी कैलेंडर आया, जो चीजें भी आती हैं पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। उससे जब फॉलो अप रहता है तो हम कंसंट्रेट करते हैं, जब फॉलो अप खत्म हो जाता है तो हम ऐसे कौन सोचने का शिकार है, फिर आप उस तरह कमिटमेंट शो नहीं करते। आप टीचर के संडे की मैं मिसाल देता हूँ, 30 जून अगर PMI को यहाँ से उस पर फॉलो अप ना होता तो मैंने समझता कि 30 जून तक सबको इंसेंटिव मिल सकता। तो जितना आप कमिटमेंट है, हमारा DSD, हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉलो अप पे जितना कमिटमेंट होगा इतना ही हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे और इतना ही हमारा बेहतर होगा। और ग्राउंड रियलिटी बच्चों के हवाले से है, टीचर प्रेजेंस के हवाले से है। टीचर प्रेजेंस के लिए मैकेनिज्म मौजूद है। अगर हमारे EDOs से लेके EDOs तक विजिट करें, अकाउंटेबिलिटी करें, उन पे एक्शन करें, अगर कोई एब्सेंट है तो वो तो विजिट किया जा सकता है। देयर इज अ मैकेनिज्म अवेलेबल इन द सिस्टम। लेकिन जहां तक बच्चों के इन्वॉल्वमेंट और ड्रॉप आउट का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि हम उनको 100% एनरोल कर देंगे। हम ये कहते हैं कि हमने 90% कर दिया, 85 कर दिया, 95 कर दिया। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रूटीन में दाखिल होना था। जो असल प्लानिंग है वो रिमेनिंग 5 और 10% जो हमारे रहते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई प्लान है, उनके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म है। तो इसके लिए भी हमें इंस्टीगेट किया जाए कि हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। Thank you. Kamali, can you just give us a brief summary of that in English? There were two very important points made. First one was that since the government has provided incentives that has been targeted and very confident that due to those incentives they will be motivated and perform on the
really part of my mentioned earlier. Trying track is really confident on the ground that my community, especially on the student growth front, because the student growth is something for the population growth. Like all the children who actually need training to do that might not be the case in that they're getting growth. They want to help on the guide to help them facilitate to get growth out of the children. Thank you very much. I don't know what the sign whether you want to add anything, having heard the comment. Okay. I can't understand Urdu. I'm glad that you're having a conversation in Urdu, but when I listen to the colleagues speaking Urdu, I keep hearing the same phrase in English in the middle of Urdu, around reality. Around reality. Our job and the point of this whole training is helping you change the ground reality. That's what we want to help. Really focusing on making a difference for the children in classrooms, for the families who send their children to school, changing the ground reality. So I remember this phrase. I think it's very, very important. What we want to do now is talk to two of you, EDO Multan and EDO Bahalpur, about how you've been doing target setting. So I'm going to come over there with a microphone and interview the EDO Multan briefly and ask him how he's been influencing the targets in his district. And then Simon Day is going to interview the EDO Bahalpur about the same thing. I'm going to ask the question in English because that's the only language I have. But you can feel free to answer in Urdu for the benefit of your colleagues if that's what you prefer. One of the hands on the microphone. To set targets where you've been able to do that. And I read that and I found it very interesting. It told me a lot about the ground reality of being EDO, which obviously I've had experience of. But you sent in some very detailed work about how you would be setting targets, not just for the district, but for each of your tehsils and markets. Would you like to explain to the other EDOs how you went about doing that? When a step of movement was given to me, I ran to listen to them. First of all, I called chief of our meeting because there is a broad forum in which public representative, stakeholders, maximum are involved. I consulted with them for the future planning and district action plan with the help of NCST and APA was finalized and improved from the DCO district board. Then survey was started and first survey was low. I formed 16 teams in especially Multan city